Hello students, this video is of grade UKG, so let's get started. In this video, we will get to know about three different subjects which are English, Maths and EVS. So let's start with our first subject, English. The question says, write the name of each picture and circle the vowel letter. You can see pictures over here. You have to write their name and circle the vowel letter in the spelling. Okay? आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिख रहे हैं. उन पिक्चर्स को पहले आइडेंटिफाई करना है, पहले पहचानना है कि कौन से पिक्चर्स हैं. एंड आई नो यू ऑल कैन डू दिस. आप सब पहचान सकते हैं कि कौन सा पिक्चर है. फिर क्या करना है, आपको इनकी स्पेलिंग राइट करनी है, इनका नेम राइट करना है. ओके, यू हैव टू राइट दियर नेम. फिर क्या करना है, आफ्टर राइटिंग द नेम यू हैव टू सर्कल द वॉवेल्स इन इट. ओके, उसके अंदर जो भी वॉवेल्स आएंगे स्पेलिंग में ए ई आई ओ यू, इन वॉवेल्स को सर्कल करना है. अंडरस्टूड? लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ, पहला पिक्चर कौन सा है? की, के ई वाई, की नहीं है, कीज है. देखिए दो की है ना, दो चाबी है, मतलब हो गया चाबियां, मतलब कीज, के ई वाई एस, कीज. ओके, सो व्हाट वी विल राइट, वी विल राइट के ई वाई एस, कीज. ओके, तो ये होगी स्पेलिंग. अब इसमें हमें वॉवेल लेटर को सर्कल भी करना है. ओके, वॉवेल लेटर को सर्कल भी करना है. सो व्हाट इज द वॉवेल इन दिस? ई क्या है? वॉवेल है. So we will circle the letter E. Now, see the next picture. Next picture किसकी है? Recognize what is the next picture? Squirrel. Yes, it is a squirrel. मतलब गिलहरी. S Q U I double R E L, स्क्विरल. स्क्विरल मतलब गिलहरी. अब हमें क्या करना है, वी हैव टू सर्कल वॉवेल इन दिस. इसमें वॉवेल लेटर्स को सर्कल करना है. सो यू कैन सी सो मेनी वॉवेल्स इन दिस, लाइक यू आई ई. ओके, इसमें थ्री वॉवेल्स हैं, यू आई ई. सो यू हैव टू सर्कल ऑल दीज थ्री वॉवेल लेटर्स इन द स्पेलिंग. अंडरस्टूड? इसी तरीके से आपको सारे पिक्चर्स को रिकॉग्नाइज करना है, उनके नेम लिखने हैं और स्पेलिंग में से वॉवेल लेटर को सर्कल करना है. ओके, या नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस शीट विच इज ऑफ EVS. राइट नेम्स ऑफ एनी 5 फार्म एनिमल्स. कोई भी 5 फार्म एनिमल्स. फार्म एनिमल्स मीन्स व्हाट आर फार्म एनिमल्स? फार्म एनिमल्स क्या होते हैं? फार्म एनिमल्स मीन्स जिनके थ्रू हम कोई भी फार्मिंग का काम करा सकते हों या उनकी हेल्प से फार्मिंग में कोई हेल्प होती हो. ओके, उन्हें हम कहते हैं फार्म एनिमल्स. लाइक काउ, ऑक्स, बुफेलो. ओके, इनकी हेल्प से क्या होता है, फार्मिंग हो सकती है. जैसे जो काउ डंग होता है, मतलब जैसे हम कहते हैं हिंदी में गोबर, वो क्या होता है, उसको हम एज अ फर्टिलाइजर खेतों में यूज करते हैं फॉर फार्मिंग. अंडरस्टूड? सो कोई भी ऐसे एनिमल जो किसी भी तरीके से फार्मिंग में हेल्प करते हैं, उन्हें हम फार्म एनिमल्स कहते हैं. और फार्म में रहते हैं, उनकी जगह भी होती है रहने की, उसके कहते हैं हम फार्म. ओके, जहाँ ये सारे एनिमल्स रहते हैं ना, उसे कहते हैं फार्म. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड नोन एज फार्म एनिमल्स. ओके, तो आपको यहाँ पे कोई भी 5 फार्म एनिमल्स के नेम राइट करना है. लाइक आई हैव टोल्ड यू 3, OX ऑक्स, COW काउ, BUFFALO बफेलो. एंड यू विल राइट 2 by yourself. ओके, 2 आप खुद से राइट करोगे. अंडरस्टूड? नाउ see the next question. It is an oral activity. next question oral activity है. क्या करना है, you have to record a video. पहले तो आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है. वीडियो में क्या रिकॉर्ड करना है, saying 5 sentences on any
फार्म एनिमल एंड्स। ओके, आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है 1 से 2 मिनट की। उसमें आपको क्या बताना है, किसी भी एक फार्म एनिमल के बारे में आपको बताना है। ओके, सपोज कर लिया काऊ, तो काऊ के बारे में आपको कुछ बातें बतानी है। एटलीस्ट 5 लाइन्स आपको काऊ के बारे में बतानी है। लाइक काऊ कैसी होती है, उसके वो कैसा दूध देती है। ओके, ये सारे मतलब काऊ के बारे में आपको काऊ की जितनी क्वालिटीज़ हैं और काऊ क्यों यूज़फुल है, काऊ क्यों होनी चाहिए, उसे फार्म एनिमल क्यों कहते हैं, ये सारी चीज़ें आप उसमें बताएंगे। एंड आई होप यू कैन डू दिस। Yeah. So let us move to our last section of the sheet, maths. Fill in the missing numbers. Okay, missing numbers fill करना है. Okay, step by step, counting wise, you have to fill up all these missing numbers. So for this, let us revise counting from 1 to 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100. So we have read counting from 1 to 100. I hope you all have understood this sheet very well. If you are having any kind of doubt in any subject, you can ask me. Thank you.